We also note the presence of Dr. J.L. Karihalu, Dr. S.S. Malik, Dr. B.M. Singh, Dr. S.K. Parekh, Dr. J.C. Rana, K.R.S. Yadav, Charan Singh, Shri Om Prakash, Shri Deep Chand, Shri D.K. Pokhriyal. We also welcome Dr. A.K. Singh, Director IRI, Dr. Umesh Srivastava, Dr. Ravi here in NBPGR, Dr. Dubey from ICR, Dr. Anuradha Agrawal from ICR again, मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे स्वागत प्रस्ताव रखें, एनबीपीजीआर की पिछले वर्ष की उपलब्धियां बताएं और 10वें डॉक्टर हरभजन सिंह स्मृति व्याख्यान के वक्ता माननीय डॉक्टर मंगला राय का परिचय दें। सुप्रभात। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी सम्मानित अतिथिगण, संस्थान और ब्यूरो के सारे सदस्य, इसके 10 क्षेत्रीय केंद्रों पे ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए सभी स्टाफ का अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर मंगला राय साहब, पूर्व महानिदेशक एवं सचिव डेयर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, डॉक्टर हिमांशु पाठक साहब, महानिदेशक एवं सचिव डेयर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, डॉक्टर जी.के. यादव साहब, एडीजी सीड्स, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इस सभागार में मौजूद सम्मानित डॉक्टर ए.के. सिंह जी, निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, डॉक्टर एस.सी. दुबे साहब, एडीजी एंड प्रोटेक्शन, डॉक्टर जे.सी. राणा, डॉक्टर शिव अग्रवाल, डॉक्टर उमेश श्रीवास्तव, डॉक्टर ब्रह्मानंद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर PWTC, हमारे संस्थान के सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिक गण, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि राष्ट्र की सेवा में समर्पित एनबीपीजीआर अपनी स्थापना के 47 वर्ष पूर्ण कर रहा है। 48वें स्थापना दिवस पे इसका इस परिसर में पधारे हमारे माननीय डॉक्टर मंगला राय साहब ने मुख्य अतिथि के तौर पे आने की स्वीकृति दी। इसके लिए हम और हमारा संस्थान हृदय से आपका आभार व्यक्त करता है। मुझे याद पड़ता है जब इस संस्थान की नई परिसर में शिफ्ट हुए होंगे तो उस वक्त तत्कालीन उप महानिदेशक डॉक्टर मंगला राय साहब भी थे। इस बीच में करीब 27 वर्षों का एक समय गुजरा है जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं और संस्थान ने नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। हम इस अवसर पे आपकी सहभागिता के लिए और मुख्य अतिथि के तौर पे उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आशा है कि आपके आशीर्वचन से ये संस्थान लाभान्वित होगा आने वाले दिनों में भी, क्योंकि सारी जो हमारी एक फ्रेटर्निटी है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की और उसके साथ संबद्ध स्टाफ की, वो आपके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में वाकिफ है और हमें मालूम है कि आप दिशा निर्देश देने की
इतनी अच्छी आपके पास सलाहियत है, काबिलियत है कि अगर हम अपने ध्यान अपने मार्ग से भटकेंगे तो निश्चित तौर पे हमको सही मार्ग पे लाने का आपके द्वारा निर्देश होगा। हमारे इस सभागार में उपस्थित डॉक्टर हिमांशु पाठक साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये आज अजीब इत्तेफाक है। और डॉक्टर मंगल साहब भी तो याद कर रहे थे कि 1 वर्ष आपको पूर्ण हुआ आज ही के दिन। संस्थान की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, न सिर्फ इस समारोह में पधारने के लिए बल्कि विगत दिनों जैसा चर्चा होती है आम, हमारे संस्थान में जो रिक्त पद अध्यक्ष के थे सारे आपके कार्यकाल में नवनियुक्त अध्यक्ष अपना कार्यभार ग्रहण कर लिए हैं और संस्थान पूरे एकजुट होकर राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि पीजीआर की जो गतिविधियां हैं वो 1910 में प्रारंभ हुई। माफ कीजिएगा, मैं डॉक्टर DK यादव का भी और धन्यवाद देना चाहता हूं कि अस्वस्थ होने के बावजूद आज के इस समारोह में पधारे हैं और ये दर्शाता है कि एक बेहतर लगाव हमारे संस्थान से यादव साहब का है और हम लोगों का साथ काम करने का एक बड़ा लंबा अनुभव है IRI के अंदर। तो एक जो काउंसिल में और संस्थान के बीच में एक परस्पर रैपो की भावना होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि डॉक्टर DK यादव के रहने से मुझे काफ़ी सहूलियतें मिलती हैं। पिछले दिनों जब हमें थोड़ा वित्तीय संकट से भी गुजरना पड़ रहा था उस वक्त भी यादव साहब ने करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए का एक अतिरिक्त अनुदान उनको दिलवाया था, जिससे संस्थान की जो बेहद आवश्यक चीजें हैं जैसे कि जीन बैंक के रख रखाव इत्यादि उसमें सहूलियत मिली। तो मैं आपका बहुत आभार करता हूँ। मुझे मालूम है कि आपको काफ़ी तकलीफ है परंतु इस अवसर पे आप उपस्थित हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जैसा बता रहा था कि 1910 में हार्वर्ड के द्वारा एक पीजीआर एक्टिविटी की शुरुआत की गई थी जो आगे बढ़कर डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स से डिवीजन ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन और वस्तुतः आज की स्थिति में 1976 में जो एक नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना हुई, वो एक ऐसा प्रयास था जिससे कि हमारे देश की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, जिससे कि आने वाले समय में हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको भी ये सब नैसर्गिक बायोडाइवर्सिटी उपलब्ध रहे, वो चलती रहे। इस दिशा में एक बेहद सराहनीय प्रयास काउंसिल के द्वारा हुआ था और आज हम विश्व के द्वितीय सबसे बड़े जीन बैंक के रूप में स्थापित हैं। सीड जीन बैंक में हमारे 4,68,000 और कुल मिला के करीब 4,80,000 एक्सेशन, जिसमें सीड जीन बैंक, क्रायो बैंक और टिश्यू कल्चर के माध्यम से हमने जो कंजर्व किया है वो एक ऐसी मिसाल है कि मतलब आने वाले दिनों में जरूर इस संस्थान का योगदान याद किया जाएगा। हमारा संस्थान विभिन्न विभागों के माध्यम से जैसे प्लांट एक्सप्लोरेशन, कंजर्वेशन और इवैल्यूएशन, जीनोमिक रिसोर्सेज, तो साथ साथ भारत सरकार के जो विभिन्न मुआहदे हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उसको उसमें एक पॉलिसी एडवाइस देने का कार्य भी करता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, हमारे सम्मानित मंच पे आसीन अतिथिगण सब इन बातों से अवगत हैं और इन्हीं के देख रेख में ये सारे काम संपन्न हुए हैं। अतः बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए मैं इस संस्थान की विगत 1 साल की उपलब्धियों पर महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। संस्थान परिषद ने एक पहल शुरू की थी जिसमें विभिन्न संस्थानों की रैंकिंग की व्यवस्था की गई थी और अदर देन IRI हमारा संस्थान सर्वोच्च स्थान पर रहा। इसके लिए हम बहुत ही काउंसिल के शुक्रगुजार हैं। विभिन्न एक्सप्लोरेशंस के माध्यम से, जिसकी तादाद करीब करीब 2000 है, हमने जर्म प्लाज्म को एक्सप्लोर किया, उनको कलेक्ट किया,
जिसमें करीब 55% कल्टिवेटेड बैकग्राउंड में थी और 45% वाइल्ड रिलेटिव थी, उनको हमने अपने यहाँ कंजर्व किया। 537 हर्बेरियम स्पेसिमेंट्स को ऐड किया अपने संस्थान के जो एक हर्बेरियम है, नेशनल हर्बेरियम। हमने एक यूजर फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन भी इसी दौरान डेवलप किया था डेटा रिकॉर्डिंग के लिए। जब हम जाते हैं एक्सप्लोरेशन पे तो समान तौर पे ये डेटा रिकॉर्डिंग हो, जिससे कि विभिन्नता ना आए, और जब उसको हम डेटाबेस में एंट्री करते हैं तो कोई दिक्कत ना आए। तो एक मोबाइल ऐप इस दिशा में डेवलप किया गया। नेशनल रेनफेड अथॉरिटी से एक मुआहदा किया गया, समझौता किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने आसाम में बोरजूली में वाइल्ड राइस कंजर्वेशन का एक कह सकते हैं कि सेंचुरी वहां डेवलप कराया, जो वस्तुतः मर गया था, उसको पुनर्जीवित करने का कार्य किया गया। पिछले वर्ष में करीब 51,000 जर्मप्लाज्म एक्सेशंस का आदान प्रदान हुआ है, जो कि मैं मानता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। इसके अलावा 16,000 से अधिक नर्सरीज, हमारे डॉक्टर शिव अग्रवाल बैठे हुए हैं, इकार्डा से, सिमिट से और अन्य सीजी इंस्टीट्यूशंस से जो बाहर से नर्सरीज आई हैं, उनको हमने देश के विभिन्न ऐसे यूज में पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया। कुल मिला के 1,40,000 जो सैंपल्स आए थे उसको क्वारंटाइन इवैल्यूएशन किया गया, पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन का। मेरे समझ से एक बहुत ही बड़ा नंबर है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने क्वारंटाइन डिवीजन को, जिसने इतना बड़ा मैसिव एक्सरसाइज किया। कैरेक्टराइजेशन और इवैल्यूएशन जर्मप्लाज्म के उपभोग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी है, और हमारा जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन कैरेक्टराइजेशन का डिपार्टमेंट डिवीजन जो है, पिछले साल 38,000 जर्मप्लाज्म एक्सेशंस का फील्ड पे ऑन फील्ड इवैल्यूएशन और कैरेक्टराइजेशन किया। और माननीय डीजी महोदय और मुख्य अतिथि का ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले साल वासिम नाम का एक स्थान है महाराष्ट्र में, अकोला जनपद में, वहां पे करीब 25,000 एक्सेशंस सॉर्गम के हमने इवैल्यूएट किए, जिसमें वाइल्ड भी थे, कल्टिवेटेड बैकग्राउंड में थे। मतलब मैं उस स्थान पर 2 बार जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं देखकर विस्मित रह गया कि कितनी बड़ी जेनेटिक डाइवर्सिटी हमारे सॉर्गम में उपलब्ध है। वो एक ऐसा कार्य था जो हमने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी डालने का प्रयास किया था, अभी उस पर कार्यक्रम चल रहा है। इस इवैल्यूएशन के माध्यम से जितने भी प्राइवेट, पब्लिक और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और डिपार्टमेंट के लोग आए, वो सबने अपना मटेरियल सिलेक्ट किया। ये वर्ष, जैसा कि आपको विदित है कि ये अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है, तो ये हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी रही। कंजर्वेशन के क्षेत्र में करीब 8,000 एक्सेशंस को रीजनरेट करने का हमने काम किया, जो टिश्यू कल्चर के माध्यम से करते हैं। इसके अलावा 516 एक्सेशंस क्रायो बैंक में ऐड हुए। हमारा संस्थान एक भारत सरकार का आइडेंटिफाइड सेंटर है ट्रांसजेनिक डिटेक्शन का, और उसके अलावा फिंगरप्रिंटिंग का, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल जब किस्मों का नोटिफिकेशन होता है तो उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक महत्वपूर्ण सूचना है जो प्रदान की जाती है। तो हमारा संस्थान इसमें लगा हुआ है, और आए दिन पोर्ट पे जो कंसाइनमेंट हमारे विभिन्न आयात के मटेरियल के जो कन्फिस्केट होते हैं, उसका भी ट्रांसजेनिक डिटेक्शन यहाँ होता है। ISO 9000-2015 सर्टिफाइड ये लैब है, और पिछले दिनों हमने इसके शुल्क के मतलब बढ़ाने के बारे में भी काफी विचार किया है, क्योंकि अभी जितना हम खर्च कर रहे हैं उतना हम ले नहीं पा रहे हैं सर। तो उसका एक कमेटी के माध्यम से शुल्क को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पीजीआर पॉलिसी, प्लानिंग पॉलिसी हमारे संस्थान की बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी है। विगत दिनों में जब हमारे इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर का 9th GB का मीटिंग हुआ था, तो उसमें हमारे संस्थान ने बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था।
मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि हमारे संस्थान के 2 वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील अर्चक और डॉक्टर प्रतिभा ब्राह्मणी उसमें एक सेगमेंट में MLS वाले में को चेयर भी नियुक्त हुए थे। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। प्रशासनिक वर्ग में और वैज्ञानिक वर्गों में जितनी भी DPCs वगैरह थी सब हमने सब नियत समय पे पूरा किया। एक कमी जो हमारे संस्थान के द्वारा मतलब फेस की जा रही है उसके बारे में उल्लेख करना चाहता हूँ कि थोड़ा वैज्ञानिक जो हैं काफी तादाद में और टेक्निकल और सपोर्ट स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी काफी रिटायरमेंट सुपरएनुएशन हो रहा है। जिस गति से रिटायरमेंट हो रहा है उस गति से हम उनका रिप्लेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, खासतौर से टेक्निकल की कैटेगरी में। हालांकि काफी फील्ड का वर्क होता है, बहुत से लोगों को शायद ये बाहर के लोगों को जानकारी नहीं होगी। काफी फील्ड का इवेल्युएशन और IRI का एक हमारा फील्ड है जिसमें IRI ने हमें भूमि दे रखी है और ईसापुर में हमारा करीब काफी बड़ा फार्म है, वहाँ पे इवेल्युएशन का कार्य किया जाता है। परंतु टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैन पावर की कमी महसूस हो रही है। साइंटिफिक वर्क में जो इकोनॉमिक बॉटनी है, टेक्सोनोमिस्ट की कमी बड़ी महसूस हो रही है, क्योंकि टेक्सोनोमिस्ट जैसा डिसिप्लिन ऐसा जब एक्सप्लोरेशन पे जाते हैं लोग, उसका जो जीनस है, उसका स्पीशीज है, उसका आइडेंटिफिकेशन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं हालांकि इस मौके पे बोलना उचित नहीं था, परंतु आदरणीय डॉक्टर हिमांशु पाठक साहब की मौजूदगी का लाभ उठाते हुए उनका ध्यान इस दिशा में खींचना चाहता था कि अगर हमको कुछ मैन पावर सपोर्ट मिलेगी तो हम इससे भी बढ़िया काम करने का प्रयास करेंगे। साथियों, जैसा आपको मालूम है कि स्थापना दिवस के अवसर पे हमारे मध्य डॉक्टर मंगला राय साहब न सिर्फ मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद हैं, वरन वो आज 10वां हरभजन सिंह मेमोरियल लेक्चर भी देंगे। और हम में से जितने लोग किसी न किसी तौर पे उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको मालूम होगा कि जब डॉक्टर मंगला राय साहब बोलते हैं तो एक सूचना का प्रवाह निकलता है और कितना फायदेमंद हो सकता है। मेरे ख्याल से डॉक्टर सुनील अर्चक अगर होंगे तो उनको पता होगा कि कल रात करीब 2-2.5 घंटे तक हम लोग बातचीत किए और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मेरा व्यक्तिगत अनुभव 1988 से सर के साथ कार्य करने का है। जब मैं छात्र था तो मैं अपने को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि ऐसे महान हस्ती के साथ किसी न किसी तौर पे जुड़ा मैं। और आज सचमुच हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं, हमारे सहयोगी संस्थान जिसमें डायरेक्टर IRI साहब आए हुए हैं, वो सारे लोग जब इस हरभजन सिंह मेमोरियल लेक्चर को सुनेंगे तो निश्चित ही सबके ज्ञान में इजाफा होगा। और खास तौर से जो हमारे युवा वैज्ञानिक हैं, मेरे ख्याल से जिनका ज्वाइनिंग ICAR में आपके सुपर एनुएशन के बाद हुआ है सर, तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाया, उन लोगों के लिए विशेष तौर पे लाभदायक होगा। और इस संस्थान में आपका आगमन काफी समय के बाद हो रहा है और मैं मानता हूं कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मेरे माध्यम से इस संस्थान में आप आए हैं। तो जैसी एक औपचारिकता होती है, हालांकि मेरी हस्ती इस किस्म की नहीं है कि मैं आपके व्यक्तित्व के बारे में बता सकूं, परंतु एक छोटा सा प्रयास करता हूं। डॉक्टर मंगला राय साहब का जन्म पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में, इत्तेफाक से हम और डॉक्टर AK सिंह इसी जनपद के निवासी हैं, वहां हुआ 30 जून 1947 को। BSc एग्रीकल्चर सर ने गोरखपुर विश्वविद्यालय से की है। और जो लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि एक जमाने में गोरखपुर विश्वविद्यालय सबसे बड़ा, ये सारे जानते हैं, तो बहुत छोटा सा ही है। सर, आपने जूनियर प्लान बिल्डर RBS कॉलेज में ज्वाइन किया। अरे ये भी जानते हैं। ठीक है सर, ठीक, उचित है। तो मैं सर मैं इस सभा के सभापति डॉक्टर हिमांशु पाठक साहब से अनुरोध करूंगा कि अब आगे की कार्रवाई आप संचालित करें। और
जो एक ऑफिशियल पार्ट था वो उसको स्किप करते हुए मैं लोगों का समय जाया नहीं करूंगा। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर पाठक साहब को, वहां चाहे तो वहीं से बोल सकते हैं। माइक लगता है? बोलना कुछ नहीं है सबको। हाँ, इनवाइट तो सर आपके अगर आदेश हो तो प्लीज। Distinguished Director General Dr. Himanshu Pathak ji, esteemed Director of this great institution, Dr. G.P. Singh ji, यादव जी, मंच पर विराजमान सभी सदस्यगण, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी, मेरे सहपाठी मलिक जी, करियालू जी, यहाँ में तो सब जितने जी बैठे हुए हैं सारे के सारे जी साथ में ही रहे हैं कभी न कभी, कुछ एक बच्चों को पीछे छोड़ के। शुरू तो किया था अंग्रेजी में बोलने का, सोचा था अंग्रेजी में ही बोलूंगा, अगर जीपी सिंह ने जब हिंदी में बोला तो अब हिंदी में ही बोलना पड़ेगा। शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि एक दिन जीपी सिंह जी मिले और मेरे को इसके लिए निमंत्रण दिया। अब मैं धर्म संकट में पड़ गया, और धर्म संकट इस बात का था कि माननीय हरभजन सिंह मेमोरियल लेक्चर जो देना है वो एक को ही देना है, और फाउंडेशन डे को तो मैंने कहा थोड़ा 2 दिन का मौका दीजिए, चेक कर लूं, क्योंकि किसी दिन होता तो चेक करने की आवश्यकता नहीं थी। 2 दिन बाद इनका फोन गया, हमने स्वीकार किया। इन्होंने कहा आप कोई टॉपिक बता दीजिए। हमने कहा आप लोग ही कोई टॉपिक बता दीजिए, जो बता देंगे उसी को बोल देंगे। कुछ ही दिन बीत गए, इन्होंने कोई टॉपिक नहीं बताया। अब मैं बहुत परेशान हुआ, तो मैंने इनको एक छोटी सी मेल भेजी। आज के जमाने में दोबारा याद कराना भी बड़ा मुश्किल का काम होता है, कौन जाने बंदा नाराज हो जाए। तो हमने कहा कि जो पिछले माननीय हरभजन सिंह मेमोरियल लेक्चर जो दिए गए हैं उनका टाइटल आप हमें भेज दीजिए। तो इन्होंने टाइटल भेजा, तो टाइटल में हमने देखा कि प्रोफेसर राम बदन सिंह जी ने पहला मेमोरियल लेक्चर 2012 में दिया था, और पिछले वर्ष जो मेमोरियल लेक्चर था वो पीएल गौतम साहब ने दिया था। हमने जब टॉपिक पर दृष्टिपात करने का प्रयास किया तो देखा 2-3 सालों में कोई टॉपिक ही नहीं था। तो मैंने सोचा यहाँ कुछ भी चल जाएगा, टॉपिक दो या ना दो, बात बन जाएगी। अभी मैं यही सोच रहा था कि बाहर से ड्राइवर गाड़ी लेके आया घर में, और मैं गया दरवाजा खोलने। तो मनन स्थिति में चूंकि चिंतन मनन चल रहा था, तो मैं अपना पैर जो है राइट जगह नहीं रखा था, इसलिए बहुत जबरदस्त चोट लग गई। इसलिए आप देख रहे होंगे मुझे अभी चलने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैंने सोचा इसी टॉपिक पर बोल देता हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि मेरे पैर की पोजीशन जो है वो राइट नहीं थी, इसीलिए मुझे चोट लगी। तो सोचा क्योंकि एनबीपीजीआर में जाना है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, सीड की बात करनी है, सीड सैपलिंग, प्लांटिंग मटेरियल्स, प्रोपोज्यूल की बात करनी है, तो प्री पोजिशनिंग वर्ड जो है जरूर होना चाहिए।
तो सोचा प्री पोजिशनिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग एंड इमर्जिंग नेशनल एंड ग्लोबल सिनारियो को बोल देता हूं। तो मैंने घर में 2 आदमियों से पूछा कि ये प्री पोजिशनिंग ठीक रहेगा? दोनों ने कहा ये कोई टॉपिक है क्या? पर मैंने मन तो बना लिया था। तो सोचा था अंग्रेजी में बोलने का, जैसा मैं बोला, पर अब तो हिंदी में ही बोलूंगा क्योंकि टॉपिक अंग्रेजी में सोचा था, इसलिए आपको अंग्रेजी में बता दिया। अब प्री पोजिशनिंग के पहले फूड फॉर थॉट हमें जीपी सिंह जी ने ही दे दिया। ये बोले मैं स्टूडेंट लाइफ से इनको जानता हूं, बात अच्छा समझ सकते हैं, पर ये बताना भूल गए कि इनका पीएचडी का वाइवा मैं ही लिया। और पीएचडी का वाइवा लेने के लिए मुझे इसलिए बुलाया गया था कि जहां से ये पीएचडी करते थे, नाम बताना उचित नहीं होगा, डीन का नाम भी बताना उचित नहीं होगा, पर डीन साहब हेल्प बेंट अपान थे कि इसका वाइवा हो न पाए। तो संभवतः इसीलिए रजिस्ट्रार ने शायद दूरबीन लेके मेरे को खोजा था, अदरवाइज मुझे क्यों बुलाया जाता। तो मैं गया तो बताया गया कि कमेटी के मेंबर्स तो आने को तैयार नहीं है क्योंकि डीन साहब ने जो है वो मना कर रखा है। हमने कहा जरा सबका फोन मिलाओ, हमने बात किया। आपके कमेटी में लेट जियाउद्दीन अहमद भी थे, ठीक बात है ना? तो सर ने मेरे को कहा सर डीन मना किया है तो कैसे आऊं? तो मैंने कहा ये उचित है क्या? बोले सर ये उचित तो नहीं है, पर आप वाइवा ले लीजिए ना, हम लोग कागज पे दस्तखत कर देंगे। तो मैंने कहा काम तो हो गया। तो इनका वाइवा कमेटी वाले नहीं लिए, क्योंकि याद है मैंने ये लिया। पर उस दिन on that very day I was pretty sure that this great institution is not able to position itself in the right perspective, and that is the reason distortion is likely to bound to be the destiny of this institution. ये इंस्टीट्यूशन गिरेगा क्योंकि शिक्षा जगत से, जिसमें शिक्षा का भार जिसके ऊपर है, जो डीन है, वो कतिपय ऐसे कारणों से जो साइंटिफिक नहीं है, अगर किसी पीएचडी स्कॉलर का वाइवा डिले करना चाहता है तो इस इंस्टीट्यूशन के बुरे दिन आना अब अवश्यम भावी है। और तब से जो है वो इंस्टीट्यूशन गिरता गया। लोगों ने यहां तक कहा कि when it was college it was the best, when it was an institute it was still better, and being a university it is one of the worst. It's a different matter that in your institution ranking it was nowhere. पहली बार इस बार 50 के आसपास आया है। अब नाम बिना बताए भी आप समझ गए होंगे कि वो इंस्टीट्यूशन कौन है। आज के जमाने में नाम लेना बहुत खतरनाक है, इसलिए प्री पोजीशन करते समय नाम मत ले। Since A.K. Singh is sitting here and he referred to, we have studied in the same school as well. And since IRI, the great premier institution, which has been the mother institution, so far paying homage to the great person, late Harbhajan Singh Ji, it would be worthwhile to remember his great contribution from the mother institution, as well as to this great institution, including the very basic genetic resources which were so dear and dear to him. So my floral tribute to him.
And therefore, I am duty bound that pre-positioning should start right from ICAR. And right from the gate. The new gate today, the original old gate stands closed. And when you used to enter, left hand side there was a slum dwellers juggies colored. So we got it vacated, but one AK is still remaining. And do you know why it is remaining? The man was indeed extremely clever. नीचे भगवान है और ऊपर बिना बुलाए मेहमान है. So who can touch it? So the great man has pre-positioned himself remarkably well. The land which is in front of you was going to be vacated, and whole 3-truck police force was right here. But the then director, I will not take it. When that was vacated, do you know, nobody in the country was accessible who can make decision up to 1 AM. Right up to minister, nobody was accessible. Because they have been briefed that you are not accessible to anybody. So it was demolished. And here, the director was so much in anxiety that he didn't inform to take that kind of position. And he broadcasted like a broadcasting corporation. And at 8 AM, when police was here, all the telephones from the country started ringing. And consequently, the police force has to be withdrawn. The director has not positioned himself in the right perspective. And so it is still the great 14, 15, 16 acres land. It's a big chunk of land remaining. We have not been able to position ourselves. I was asking the land use of soil survey building. No building is constructed as yet. And do you know, Himans, what happened? That piece of land was decided for National Bureau of Agriculturally Important Microorganisms. And it was thought appropriate that they would be side by side, because in this world everybody is independent, there must be freedom, flexibility. But this whole world we essentially need to realize, recognize, and appreciate that this world is highly interdependent. So one day, fine morning, I was called by the Director General. And he said, Dr. Rao, you do one thing. नीचे नेशनल ब्यूरो और ऊपर जो है soil survey and land use plan. And I asked the then Director General, have you looked to the future perspective? There was no answer, and I said, no, and please take the whole land. The land continued to be still vacant. So it was not a right positioning, it was a ... positioning. If you still move further, on the same day, land was transferred to National Bureau of your genetic resources on the same day. Gautam was director here. I was deputy director. And on the same day, the land which is still vacant was transferred to Economics and Policy Research Institute. 15, 20 years we are having a colony, and their land continued to be vacant. It's the difference between positioning and pre-positioning. Here the positioning was that we were able to convince
that one master plan which we were able to convince. And they were not able to convince. Same day, 15, 20 years have passed. The very basic background clearly indicates that positioning and pre-positioning is so important, and I have taken example right from your surrounding. Notwithstanding the commendable job which has been done by the IRI and this BUO. They have been the mother institution for this nation, and we all are indebted to these institutions. Our generations will continue to be indebted, notwithstanding with the tremendous performance and contribution made. What I am going to talk about is positioning and pre-positioning with respect to the National Bureau and this country, so that we continue to attain and sustain advantage in existing and emerging global environment. And in the first pre-positioning, it comes to my mind again from IRI, we must learn lesson that the earthquake came and that great institution IRI from Tusha has to be shifted to Delhi. And the first and foremost which would I like to bring to your kind attention, that we must pre-position as early as possible, look into the ground realities and the situation for an efficient, effective and relevant duplicates and a gene bank somewhere else. We must duplicate as early as possible. And while considering, you do consider taking relation from IRI, the seismic zones, the security concerns, you consider all, but I consider this is absolutely, absolutely essential. The basic, very basic evaluation of the germplasm, if you are not able to adequately sample the existing genetic variability, and if you are not able to have efficient, effective and relevant means, mechanism and system for utilization of those resources, the very basic fruit of these cannot be harnessed. भाई जब टाइम हो जाए तो बता देना, तो मेरा तो कोई ठीक है नहीं। डीजी साहब आप बता दीजिए, आप खाली हैं कि पक्का? अरे इतना मैं थोड़ा बोलूँगा। But once you have said, I would like to bring to your kind attention, as GP was mentioning, I'm shifting from there. The farmer's right. I remember RCA Jain, the then additional secretary, who subsequently became secretary. We too, he was having a law background. So we used to go for negotiations. And for 5-6 years, we were negotiating. And we were tired of. So in the night, we two, taking dinner together, decided tomorrow either this side or that side. So next day, the first flag was of India, and discussion started at 9 o'clock. And that is the day in which there was no lunch break. And it continued up to 8 p.m. without tea, without lunch break. You can imagine the intensity of discussion. And then India's motion was defeated. Venezuela, Mr. Garvashi, Ambassador Garvashi used to be the chair. And India's motion was defeated. Then do you know what happened? I said,
Mr. Garbashi, the distinguished chair, why do you want to be with these people? We are the 70% humanity of the world. Why don't you shift side? Because China was with us. So there was a laughter. And in the laughter, the Canadian representative was Badbola. So in this cutting joke, when the motion was defeated, he should have kept quiet, but he was not able to position himself. So he started discussion. And when the discussion started, the last battle was won. At 10:35 p.m. in the night, in an American great lady, it was a different matter that when she went back, she has deviated from the national brief and she has to lose her job. The motion was carried through and the farmers' right came into being. The issue is if we can debate from 9 a.m. till 10:30 p.m., we can speak not 2-3 hours, maybe hours together. But that's not the issue. The issue is, despite positioning, despite being in the winning position, we have been able to have pre-positioned ourselves to derive any benefit whatsoever on the farmers' right till today. Instead giving some prasasti patra and some token here, there, and globally. Despite there is provision in the rules and regulations, we have not been able to harness the potential. Probably we have not been able to pre-position ourselves in the existing and emerging situation the way we have been. The issue which I was talking about from where I shifted, because you came in between, the very basic varietal development program. I was talking about the very basic sampling the existing genetic variability and its efficient and effective and relevant utilization. और यादव जी चूंकि सीट के हैं तो मैं इनको छेड़ता रहता हूँ और ये मेरे ऊपर बहुत नाराज होते रहते हैं। आज भी मैंने इनको सुबह सुबह छेड़ दिया just to pre-position. मैंने कहा what about your budget? इन्होंने कहा we have no sufficient budget. तो मैंने कहा how much? इस समय जो है पूरा कंट्री का I'm doing very good research which I never did in my life. जो दिखता है वो होता नहीं. And we are coining slogans and words and in the whole world. The whole energy is going only in that. So finance ministry coined word he repeated in inverted comma. And he said 5.5 times budget increase ho gaya. It reminded me that when Professor Joy, who was the equivalent of DG ICAR, is president of the Academy of China, once he said, Dr. Rai, how much you got in the plan? I said, I wanted 5 times. I got 2.5 times. He said, Dr. Rai, I wanted 15 times and I got 15 times. I do not know, I have not verified if it was 15 times or 10 times. But it goes without saying that China budget went many times. And we today are spending our research intensity ratio at 0.3. China is 0.6. And United States of America, where 1, 2, 3, 4, 5% in the developed world, less than 10% farmers are in agriculture, their budget is more than 1, 2. That's the kind of situation. So he said 5.5. I said, it might be a wonderful slogan, as I received many slogans. I said, it must be 5.5%. He said, no.
GP, you were sitting there and witness. Then he came in the year 2019-20, and then he came 5 years. I asked a question that is 5.5 times. Compare with comparables. If you are talking of annual budget, you talk with respect to percentage increase at times with respect to annual budget. 5.5 times of 1 year basis is only 0.5 remaining, and in the first very year when 6-7% inflation is taking place, your budget becomes minus, and in the 5 years it becomes much more. You calculate. So the resources, we are not pre-positioning. My friend, in the existing and emerging environment, climate is changing. There is no reason why it should not change. But should it change the way it is changing? Should it change with the rate it is changing? And if it is changing and ever increasing the rate of increase, then you can only way to offset these changes to invest more and more in R&D efforts. Even our brain is not going, if you read the Asian report, vulnerability report, Asian report, your Indo-Gangetic alluvium is on 0 to 10 vulnerability scale is at 9. The very basic soil biota, the very basic soil degradation, the very basic environmental manipulations, you go on and on. And if this has become so vulnerable, then are we able to pre-position ourselves to meet the existing and emerging situation and the amount of varietal improvement to meet these challenges are we able to spend? The location, situation, and system-specific technologies which would essentially be called upon, क्योंकि इसी साल मानसून कैसे बिहेव किया है, हाफ स्टेप एंड जंप. मैं 10वीं ग्रामी में पढ़ा करता था कि मानसून जो है कंटिन्यूअस नहीं होता, हाफ स्टेप एंड जंप. तो इस बार देखा कि हाफ स्टेप जंप कितना लंबा लगा दिया. So even in a state, not only extent and content, not only the distribution, it will behave like half step and jump. And therefore, far more location, situation, and system specific technologies at micro level would essentially be called for, and this would require not only the agronomic management and manipulations, but it would require the very basic varietal constellations. And you don't have funds. My friend, ATG Sahab, you are very, very important. Why you are important? ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए कि seed itself is not a technology in itself. Seed is a technology which ensures other agro production and protection technologies to be productive and cost effective. Responsive seed नहीं होगा तो डीजी साहब फर्टिलाइजर को तो देते जाइए, पेस्टिसाइड देते जाइए. And in this varietal development front, the way acquisition and merger is taking place, now there are only 3 giants at the global level. I will not explain who are the owners of those. One is our neighbor. And not only the seed, but the growth promoting hormones to regulators, to pesticides, etc., etc., etc. So foreseeing the future, foreseeable future, and we essentially require to pre-position ourselves. In the genetic resources, whatever existing variability you have been able to sample, you have been sampling on the shoot. You have not been looking to the roots.
The reason being that the electronics, the sensor-based decision support system has not been developed. But now that enabling environment and mechanism is available. And therefore, imagine the very basic evaluation work with respect to root system. And when I talk about the root system, then I talk about the capability to selective uptake of be it anions or be it cations, be it acid soils or be it alkaline soils or be it saline soils. So differential genetic mechanisms do exist. So your very basic evaluation have to go down the line, whatever we have been doing on the shoot to the roots. You would require investment. With the kind of sophistication you can do it. The way the whole world is becoming quality conscious. The very basic amino acid profiles, the very basic fatty acid profiles, and the very basic constellation of all these, depending on the preferential uptake, including carbohydrates, would require altogether a different kind of evaluation and varietal improvement. We are not able to pre-position ourselves. Say, for example, seed institution, why I said global level. You look back to the constellation of the board of management, and now it is going to be one. See who used to be on the board of management before. And analyze in the last 10, 15 years, who are now on the board of management. If I would say brokers, they will become very angry. If I say who can make things convenient, they will be very angry. But you have to analyze. I remember Bob was delivering a lecture, it was 1997 when I was on the Senate Board of Trustees. And he used a sentence, because WTO came into being in 1995, and 1 or 2 years later, Bob, who used to be one of the strongest men in US for their policy setting, he used only one sentence, that varieties are perfect private good. Only one sentence in his whole lecture. And when I came in India, I have presented to my government that seed institutions are going to go a sea change. Now they will not be going for a finished product because they are being looked as a perfect private good in the existing and emerging intellectual property regime. And since 25 years have passed, and each year I have shown shifting and drifting. On the name of pro-women, on the name of pro-poor, on the name of, very good name, natural resource management, soil management. And you see, if you analyze, therefore, we have to be pre-positioned. We have to perform the kind of job of pre-breeding. We have to perform the kind of job which are essentially required to support location and system-specific technologies far more than ever before. Because it is written on the wall very carefully. And since it is donor-driven, you know what kind of products would be the order of the day. And in what direction this tuning and retuning will be there. I'm not making any comment as to who is giving how much resources to whom. But there are seed institutions. And if you read back, say for example, Borlaug Institute for Southeast Asia, read what was in the document and what they were expected to do. और वो अब वो काम कर रहे हैं जो सीट बनाना, ये बनाना, वो बनाना, वो बनाना. If I take name of others, you are not giving 100 crores, you are not giving 200 crores, you are giving more than 600 crores to one institution.
And you are not bothering as to what kind of research is being done and what for they were established. Where are we pre-positioning ourselves? So the kind of fruit of that which is likely to be there in the offing, I for one indeed very strongly believe that if any job which private sector should do, why public sector should do? I very strongly believe. But I must keep my eyes and ear open as to there is a fair competitive environment or not. If there is no competitive environment, then there is likely to be exploitation, which would be the order of the day. And in a country like India, we may boast anything on the earth, but where 80 crores people are still dependent on PDS system, you know what kind of people and what kind of population and constellation and what is the importance. And I say and firmly say, with all the strength at my command, that if there is economic access and if there is ecological access to food, your whole stores which you are talking about is dwindled down within 1 year. There is no economic access, and consequently we are food secure and we are boasting. But if there is an economic acceleration and if there is a growth, inclusive growth, all these stores will dwindle down. We have to critically analyze. And therefore, the very basic seed, the very basic genetic resources and very basic varietal improvement must come in the center and in the driving seat. Sooner we pre-position ourselves, better it would be. Otherwise, we are going to pay very heavy cost. Because international level and private sector, the very basic plant breeder right. Why plant breeder right came into being? Why? In the Second World War, when the economy has virtually settled in Europe and agriculture was really in the dire need, they thought of to enhance private investment in R&D efforts and varietal development front. And that is why this exclusive right was thought about. France was the country which didn't join then and there. We have more than 2 decades have passed. Have we analyzed the very basic premise on which the very basic plant breeder rights has been brought about, whether it has fulfilled 5%, 10%? Forget about 80-90%. Is there any investment which has increased? Are we not going to analyze? Are we not going to pre-position? Pani wani nahi chahiye bhai. So the very basic issue is, who is going to look at? Who is going to search the real herb? That for the very basic purpose. If it is a public good, let it be public good. But if IRI and sister institution, Basmati you are earning 37,000 crore this year. Before that 30,000 crore. Rice put together once you were 47,000 crores, all put together. 89. अभी बासमती का कितना है? 38,000 बासमती. So 38. So 37 is not very wrong. 38. Now question is, cess fund you have removed including sugarcane. ठीक है? Those who took varieties from India, let me name Australia, let me name South Africa, let me name United States of America.
their sugar recovery is minimum 12.5%, 13%. And in India, there are states where 9%, 9.5%. Our variety novelization of cane, what a marvelous contribution which India made, and at least 30 varieties being grown in 12 countries, where sugar recovery, यहाँ आप चोरी कर रहे हो, सब बोल दे रहा हूँ. How long you are going to survive? There also you have removed the cess. So cess you have removed, which used to go for research. Plant breeder right you have brought into, but you are not allowing me to give exclusive right. At the same time, you are not compensating me even for the good job done. And Yadav is telling me I have sufficient fund. So I wish you should have sufficient fund. Plus, please do realize, recognize, and appreciate ground reality. The very basic biodiversity. As there is no barrier to gene flow across plant and kingdom, and far more is likely to be the order of the day as we go along with the kind of technology which is in the offering. In the pre-positioning, transgenics, 200 billion hectare is under transgenics. Even Bangladesh has been able to have these varieties, biofortified varieties. Are we able to pre-position in this country efficiently, effectively, and relevantly? So one on the policy front to the government, at the same, whether we were able to pre-position ourselves appropriately, when AMA1 gene which was cloned from amaranth was transferred to potato, have we been able to pre-position ourselves? Professor Asasdutta, a remarkable contribution, but the very basic gene was transferred, not when cultivated potato, the species which is cultivated, but in the wild one. प्रोटीन कंटेंट दुगना हो गया और मिड डे मील में बटेगा, पब्लिसिटी तो प्रभु की कृपा से आसमान में. And male culprit ICR, क्या भैया कि ICR सीटी नहीं बना रहा. Please read those newspapers. Now, whether those people were able to pre-position themselves efficiently, effectively, and relevant to put those genes in efficient, effective, and relevant background, that is cultivated potato, the whole basic situation and scenarios could have gone a sea change. We were not able to. Neither scientists were able to pre-position itself, nor the government in policy setting was able to pre-position itself commensurate with the potential and the potential to harness. We were not in position. How come that we were able to release BT cotton and subsequently, you know how much? I remember 55% of insecticides at that point of time used to be used for controlling only one pest, that is Helicobacter pylori cotton. Even synthetic parathrites used to be used, and 8-9 spray used to be ineffective. And you see how much productivity increase, what happened. Bacillus thuringiensis, the gene which has been transferred, that used to be used as a pesticide for 4 or 5 decades. We were not able to appropriately pre-position ourselves. Forget about. Thanks GP, and I do not know which lecture, your lecture, or that जिसमें मैंने कहा कि ये सिर्फ पागल ही कर सकता है. कभी कभी मेरे को गुस्सा आ जाता है तो बहुत अच्छा होता है. In my lecture, Amrit Mahosh, and gene editing, the very basic government, if there is no foreign gene and nothing is from outside, then how come that you have put that in the transgenic category? तो मैंने उस लेक्चर में यही कहा था कि ये काम कोई कंट्री नहीं कर सकता, सिर्फ पागल ही कर सकता है. If you see your record,
And after 7-8 days, I do not know what happened. वो पागल वाला बात लग गई, वो ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विड्रॉ कर. The precise point which I'm trying to drive home is, पागल कहना, I'm sorry, मेरे को नहीं बोलना था. But the very basic passion, the very basic damage which is being done to the nation, I think we must tell the truth. A few days back, one of the geneticists asked me कि सर थोड़ा मेरे को बता दीजिए, वो कोर्स करिकुला बन रहा है. मैं काहे का कोर्स करिकुला बन रहा है? कोर्स करिकुला बन रहा है नेचुरल फार्मिंग का. तो सर जेनेटिक्स का कोर्स करिकुला बनाना है, थोड़ा बता दीजिए. तो हमने भाई जिसने तुमको काम दिया है उससे पूछ लो. वो बोला नहीं सर, मैं क्या करता भाई. मैं बोला भाई अब तू जाके अपने अथॉरिटीज को ये बोलो कि मेंटल पैदा हुआ था, अभी एके सिंह जो है मनाए हैं 200वीं सालगिरह, पर एक्चुअली दैट केम इनटू बीइंग इन 1900 when 3 scientists independently, इस्मार्क, कोरेंस और एक और कौन था, हाँ, रीडिस्कवरी ऑफ मंडला. तो अभी तो 122 बरस ही हुए, और नेचुरल फार्मिंग तो टाइम मेमोरियल से है भाई. तो उसमें यही लिख दे कि जेनेटिक्स का कोर्स तो नेचुरल फार्मिंग का बनाना थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है. अब नेचुरल फार्मिंग क्या पढ़ाओगे अगर टेक्नोलॉजी वैलिडेट नहीं किए हो? तो बच्चे को क्या पढ़ाओगे भाई? आई एम नॉट लिसनिंग एनीबॉडी टॉकिंग कि whether you provide nutrient by organic means or by inorganic means, plant do take nutrient by ionic means only. अगर तुम कार्बन कंटेंट जो है ठीक रख रहे हो सॉइल में, सॉइल बायोटा ठीक रख रहे हो और न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस नहीं करने दे रहे हो, तो जो है क्या होगा भाई? 80 to 90% soil biological processes are by microbes. And we are not telling. So the question is, we need to essentially pre-position. We essentially need to pre-position. आपने एक डॉक्यूमेंट दिया, वो तो सही होगा क्योंकि पार्लियामेंट तक आपने पहुंचा दिया, तो सही होगा भाई, मैं क्यों बोलूं. अब हरभजन सिंह मेमोरियल लेक्चर दे रहा हूं, तो वो लोग, मैंने जितना जानता हूं, सत्य के लिए ही खड़ा रहते थे. तो सत्य तो मेरे को बोलना पड़ेगा, ये गलती आपकी है. सो किसी ने दुगना ईट कर दिया, किसी ने तिगुना कर दिया, कई तो मन चले ऐसे कि चरगुना कर दिया. अब आपने सब दे दिया, वो छपो खूब सुंदर छप ही जाता है. अब वो बट गया पूरे देश में. हर आदमी तो जानता है ना कि हर आदमी जानता है इनकम, वर्ड यूज्ड इज इनकम. Try to understand. I will not tell the name. About 6 years back, I asked to the Niti Aayog. I was knowing you a wonderful person. So one day उन्होंने हमें नोट शीट दिखाया कि सर, read it. I have written कि 26% ही मैक्सिमम आय कंट्री की 5 साल में बढ़ सकती है with the kind of GDP. Means we have not been able to pre-position ourselves, and we are giving the kind of documents. Why ICAR then asking money? Why university is asking money? अगर आय जो है दुगुना तिगुना चारगुना हो जा रही है, तो फार्म से पैदा करो, अपना काम करो. Why people will give you money? We are not pre-positioning, my friend, appropriately. इसीलिए मैं बार बार पहले भी बोलता था, फिर रिपीट कर दे रहा हूं. सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम को मैंने मॉडिफाई किया कि साइंस में अप्रिय सत्य भी संयत भाषा में अवश्य बोलो, नहीं तो वेरी बेसिक इंडिविजुअल, नेशन
और साइंस की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। So the very basic ground realities. Why can't we quote? Look to the Netherlands. कितना फर्टिलाइजर पर हेक्टेयर पर एनम यूज करते हैं? 650 तो मैं ही पढ़ा था, अब 700 kg पर हेक्टेयर पर एनम हो गया। Forget about that. How much is being used in Egypt in Nile Delta? 550 kg पर हेक्टेयर पर एनम तो मैं पढ़ा था, अब 600 kg के होगा। कंट्री में how much you are using? 150. And the kind of rampant new imbalances. Once I was reading 65% soils are zinc deficient. Sulfur. You go on and on. Go on providing other nutrients. The very basic productivity is bound to decelerate. And you are talking about increasing it. You are talking about 1 kg NPK you were giving, Director General Sahab, you were harvesting 50 kg of wheat. Today you are giving 1 kg of NPK and you are harvesting less than 5 kg of wheat. 10 times less. Why are we not taking? When the total factor productivity is soil biota, the very basic organic matter, and therefore we have to say spade is spade. And this is for which we stand. हमारी भाषा बहुत संयत होनी चाहिए। मैं गुस्से में बोल दिया कि पागल ही कर सकता है, मुझे नहीं बोलना चाहिए। I am sorry for that. पर बात तो सही थी। So we essentially need to pre-position ourselves. Jin KK Deoria in 2009 came, and has it become the order of the day? And that was the first and last. Why? Who will analyze your micronutrient use deficiencies? How plant would respond? Is 2%, 3%, in nowhere more than 5%. Who will do research? Who will change the very basic spectrum so that use efficiency? We have 17.78% population. We have only 4.2% water. We have only 2.3% land. Our water use efficiency 25%, 30%. And we always compare and talk about one of the best in the world, and Israel minimum use efficiency is 80%. 4.2% water, more than 17% population, more than 11% livestock have to thrive on 4.2% water, and use efficiency is this. And you always, when you will intensify, these plants will have to respond to added doses of inputs. So there would be a ceiling. And therefore we must recognize and know. And do you know why this is all happening? Somebody, the economics department should analyze. It is none of my job of being a geneticist to analyze. You are giving subsidy to the tune of 1,15,000 crore. Since February 2022, fertilizer prices has gone up minimum by 40%. Fertilizers like potash, you are 100% importing. And today, if you import the same amount of fertilizer, you will have to pay a subsidy of 2,25,000 crores. So what is happening? Nobody is talking about. क्या है? फर्टिलाइजर अवेलेबल नहीं है, रैक नहीं पहुंचा स्टेट में, और सीधा मतलब है कम सप्लाई कर दो तो वो जो सब्सिडी का बिल है वो कम हो जाए। Nobody is telling, nobody is analyzing, nobody is pre-positioning on these basic issues. Coming to the very basic genetic resources, as this whole world is going to become one gene pool, you must have an efficient effect. That is why
Not only DNA fingerprinting we established, not only that, we talked of DNA bank here. So there must be an efficient and relevant partnership and program around the institution. Acquisition, merger, and all, you think as you are thinking. But you must look to the dimension, the amount of species which you are dealing with. A rough estimate is there that there are about 50 million species, and maximum about 30 million are insects. 30 million. About 7-8 million are your microbes, particularly the bacteria, etc. About 1.5 million are your fungi. All put together going more than 40 million. I'm not going whether it is 100 or it is 40 or it is 45, but it is millions and millions. And now there is intellectual property regime. So you see the amount of money which is likely to flow, and see the globally what private industry is doing on the genetic resources. The very basic cloning and the very basic, and we are nowhere. Consequently, imagine a situation that in this tight regime, what is likely to be happening? Sorry, Director General Sahab, we talked about the minor millets, Sri, and this is the international year. How many people were alive of the situation that 5,000 germplasm of minor millet Japanese had collected? One set they kept in a chrysalis, another set they kept in, they took it to Japan. Why I took your name? Because you are on the board of governors. Nobody gave money. Nobody gave money. And today, by evening, we from Bihar are going to give money. In the cabinet meeting today, it is going to be decided. So we are going to give 16 crore of rupees. And that germplasm has already been grown in the field, that we will support you to grow it. Who will give this money? Should it be given by the Bihar government? Where are we pre-positioning ourselves? It's a very poor state. They don't have resources. But it is thought appropriate that for the nation, if the nation is not strong, how come a state would become strong? We don't differentiate. And this would become a peanut. Say, for example, in your genetic resources. I recall, we retrieved the whole germplasm and duplicate set was brought here. And when I asked the accuracy, they said, "No, sir, हमारे पास जो है वो इतना sample है कि हम share नहीं कर सकते." I said, "वो तो बहाना है." हमने मान लिया वो सही बोल रहे हैं. हमने कहा फील्ड में ग्रो कर लीजिए. वो बोले फील्ड में ग्रो करेंगे तो पैसा लगेगा. हमने कहा कितना पैसा लगेगा? They said 25 lakhs. And you check from ICAR, we next day gave 25 lakhs. And a whole germplasm there was brought to your chamber. And it was very simple. National Bureau of Agriculture में हम जब ब्रिटिश पीरियड से हमारे सैंपल इस देश में we didn't pre-position ourselves appropriately, and taxonomy became a casualty, and consequently we were not able to even identify our specimens, and whole used to go to Kabi. And when I established, I had to pay, and I had to retrieve my sample from there, Kabi.
So precisely what I am trying to drive home is that these issues are indeed extremely important. And we have to be alive on the situation to pre-position ourselves. And in the pre-position, say for example, humanity, Ganendra was asking about the manpower. Again, I would like to bring to your kind attention, DG Sahab, and I have no hesitation. जब माननीय राजनाथ सिंह जी मंत्री थे तो हमने माननीय वाजपेयी जी को चिट्ठी लिखवाया. There was a ban in recruitment. और ये भी था ना 6th पे कमीशन के बाद की 10% डाउन साइज. तो बैन नहीं था, आ गया नो एक्सेप्शन. जब माननीय पवार साहब आए तो मैंने माननीय मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखवाई. वहां से भी आ गया नो एक्सेप्शन. तो वो चिट्ठी हमारे को मार्क हुई, आपके रिकॉर्ड में देख लीजिए. तो जैसे ही मैं देखा मुझे इतना गुस्सा आया, I decided कि either this side or that side. I went to Honorable Minister and said to Honorable Minister, चिट्ठी दिया, बहुत कम बोलते थे. बोले आपने पढ़ा नहीं? हमने कहा सर हमने पढ़ लिया. तो बोले फिर? हमने कहा हमने डिसाइड किया है कि हम जो है अब ये पोस्टें भरेंगे, और जब हम पोस्टें भरेंगे तो आप हमें नौकरी से निकाल देंगे. अब लोग तो पूछेंगे ही ना कि भाई तेरे को क्यों नौकरी से निकाल दिया. तो मैं बोलूंगा कि भाई मैंने चोरी तो कोई की नहीं थी, हमने कोई गलत काम नहीं किया. गलत काम एक ही किया कि ICAR बंद होने वाला था, हमने पोस्टें भर दी. तो उन्होंने कहा कि तब आप जब कह ही रहे हैं कि हम भरने जा रहे हैं तो आपको कौन रोक सकता है. मंत्री लोग तो कभी नहीं बोलेंगे ना कि आप कर लो. तो हम आए and Sushma was the secretary who she became finance secretary. So I dictated a note ordering her that send 250 positions for advertisement. Sushma brought that paper back to me and said, sir, आपने हमें क्यों लिखा? आज तक तो आप जबानी बोलते थे. मैं बोला सुषमा इसमें बहुत खतरा है, क्योंकि तुम IAS हो, इसमें एक न एक आदमी नौकरी से निकाला जाए. मुझे कोई नहीं पड़ता, मैं जाऊंगा तो अभी मार्केट ठीक ठाक ही है, मेरे को इससे अच्छा ही मिल जाएगा, तुम्हारा प्रमोशन रुक जाएगा. उसने कहा सर ये नोट रखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे नहीं होता. आई अप्रिशिएट दोज सेक्रेटरीज. मेरे साथ तो ऐसे ही सेक्रेटरी रहे 4-5, एंड ऑन द सेम डे इट वाज एडवर्टाइज. और हमने 1250 पोस्टें भरी. एंड डू यू नो व्हाट हैपेंड? प्लीज सी द रिकॉर्ड. पार्लियामेंट में बजट सेशन में 4-5 डेज, क्योंकि ये आदमी तो अब करेगा, तो नौकरी बचानी है. तो चिदम्बरम साहब और पवार साहब अगल बगल बैठे थे, और राम गोपाल यादव जी जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे एग्रीकल्चर का. उठे और बोले, भाषण रिकॉर्ड में है, देख लीजिए, कि ICAR बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई आदमी नहीं है, 2500 पोस्टें खाली हैं, और सरकार ने बैन लगा के रखा है. इतने में चिदम्बरम साहब उठे और बोले देयर इज नो बैन ऑन ICAR. और जब बजट डिबेट होता है तो सेक्रेटरी DG एक ही जगह बैठते हैं. आप बैठते हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, टीवी खोल के बैठे रहते हैं कि जो सवाल आएगा जवाब भेजना पड़ेगा तुरंत. तो वी बोथ लाफ्ड. तो मैडम ने मेरे को कहा कि सर ये आपकी नौकरी. मैंने कहा मेरी नहीं, तुम्हारी भी नौकरी बचाया. और 2 साल 2.5 साल तक हम भरते रहे, क्योंकि एश्योरेंस ऑन द पार्लियामेंट हैज ए ओवरराइडिंग प्रायोरिटी. मैं आपको ये बता रहा हूं
कि आपको पोजीशन लेनी पड़ती है। जब हम जानेंगे कि पानी सर के ऊपर जा रहा है, तो आई हैव टू टेक ए पोजीशन, एंड द पोजीशन, इफ इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट, if it is in the interest of the institution or organization, I believe, and indeed very firmly believe, that there is no power on this earth, there is, I repeat, there is no power on the earth who can do anything else against that individual or that institution. That is my lifelong experience. We were dealing with Jammu and Kashmir. We please ask those vice chancellors. Now there is no problem of funds. We have created 5 crores flexi fund to each BC where no question is going to be asked. You please ask them. We are giving 5,000 scholarship to each and every PG student. And similarly, you look many things. And in Bihar, as it has started unfolding, in each cabinet meeting, in principle approval has been given. Even to your central university, as I said, we are not differentiating anything. We are giving about 100 crores. And hopefully by the end of this month, this all sanctions will be clear. Right from gene editing to the speed breeding, and all these universities, because we believe, and indeed very strongly believe, that 100 crores or 200 crores are peanuts with the kind of dimension of the problem which we have to face as a great population increasing day in and day out. The per unit pressure on Indian soil is 5 to 6 times more than the world average. And if my investment in R&D efforts is too meager to make much dent, then as a nation, I do not know where we are positioning. In the global arena, there is no enemy and friend. In the modern materialistic world, it is the economy and economic consideration which is going to drive the destiny of a nation or institution. We must understand this. And therefore, only one request, DG sir. I am analyzing because I have enough time for all these analysis. Every day I do this on numerous issues. Please have a very vibrant group, formal or informal. Select 5, 6, 7 people. Charge them with the money. And that kind of people must have a acumen to see in the foreseeable future. They must be able to analyze as to what is likely to be in the offing. And you try to have a report from them. Say, for example, ground realities have changed, partnership domain has changed, public-private partnerships have come into being, acquisition and merger has taken place. But in 1992, management of Nationally Coordinated Crop Improvement Program under the leadership of CD, which we had, he was the deputy DG. I was ADG at that time. 92, now 30 years have passed. And we have not looked into the changing dimensions. Ground realities are changing, bound to change, it should change. But we will have to manage the change. I'm not asking about 1, 2, or 3, X, Y, or Z. But the question is, if you are fond of changing the name, we must be fond of analyzing the very basic consequences. In the KB case, they were the directorates, but the designation was directorate of this. His designation was director, very carefully looked into. Now you have institutes, 11 institutes overnight, जहां एक डायरेक्टर है और एक आध साइंटिस्ट और है, चाहे नहीं होगा, अब आप जाने.
And you used to have minimum 10 scientists to have a division. And now 11 institutes went to the kitty. Similarly, if you analyze, conflict of interest by changing the name has been brought about. And you are not realizing today, hopefully realizing. And if not realizing, this would have a disastrous consequences. These conflict of interest. Because CG institutions, the very basic generation of the material, the very basic pre-breeding, the very basic parental line development, the very basic finished product development are changing, going to go SE. DG Sahab kindly ask these groups similar questions and let them think. Have those brilliant boys. There could be S1 scientists. It is not only the experience and seniority. But think those kind of people. We used to call such people to have briefing timely, to understand. They used to be very happy कि डीजी मेरे से कंसल्ट कर रहा है. अरे डीजी को तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तुम्हारे से ही जान रहा है. So such vibrant people are absolutely essential. Say for example in plant breeders, we were not fooled that we put extent variety protection. We were not fooled. And there was only one example in the whole world before. That was in France, plant variety, because they joined later, as I say. So France has the legislation extent variety protection. And that is why ICAR did recognize that. In India, why extent varieties were brought about? Because essential derivative class is going to be very, very important in the cosmetic breedings, and therefore you can derive benefit out of so many important varieties, parental lines which you have developed. But there is no action on that part. So this question will have to be essentially asked from these so-called authorities. Authority must have freedom and flexibility, but they must be accountable to these basic issues. And these must be looked into. And these issues, which I consider, if we look into my own experience, अब मैं आपको एक्सपीरियंस बता देता हूँ, इसलिए ज्ञानेंद्र कभी-कभी हिंदी बोलना बहुत अच्छा होता है. वो क्या हुआ कि कश्मीर का बना 5,013 करोड़ का, तो उनके फाइनेंस कमिश्नर ने कहा कि सर मीटिंग में आप भी चलिए. मैं बोला मेरा काम क्या है कि सर आप चेयरमैन कमेटी के थे, भाई चलो. तो हम गए. तो एक आदमी ने आधा घंटा प्रेजेंटेशन दिया. तो पहला सवाल चीफ सेक्रेटरी का, यही सवाल आते हैं जैसे आप कह रहे थे ना फाइनेंस में, उनका काम ये सवाल पूछना. इवन एनबीपीजीआर, मेरे को याद सारा मत दिलाओ, या फिर जो एडवाइजर है फाइल निकाल के देखिए. एक बार उसने मेरे को एडवाइस दिया, तो मैंने लिखा कि आपकी एडवाइस although it seems to be wrong, however since it is your first advice, I take it on experimental basis for 1 year. दस्तखत कर दिया. नाम लूंगा तो भड़क जाएंगे लोग. वो 1 महीना पाया और मेरे को माफी मांगे कि सर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, वो जो आपको एडवाइस दिया था. मैं बोला कोई बात नहीं, सेक्रेटरी हैज दैट फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो. हॉर्न मैंने 1 साल कराया, अखबार में आया था, जानते हैं आप, आपका सॉइल्स में ही हॉर्न कराया था डीजी साहब. वो मेरे पास आ गया ऐसे ही 2003 था कि हॉर्न फार्मिंग से जो है बढ़ जाता. मैंने कहा हाँ बहुत ठीक. तो क्या मैंने कहा कि जो है वो भाई मैं तो देखूंगा. तो बोले देखना क्या है, ये प्रूवन है. मैं बोला माइंड, भाई मेरा माइंड जो है ना, हम लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप दिखा दीजिए. तो बोले ठीक है कर लीजिए.
तो मैंने कहा ऐसा है कि कहाँ कर लें। तो जो आए थे सज्जन जिनको भेजा गया था, पावरफुल नाभी, वो भोपाल से थे। ये प्री पोजिशनिंग बता रहा, इसीलिए चोट लग गई तो अच्छा हो गया, आईसीआर को न चोट लग जाए, इसलिए जो हूं बता रहा। तो हमने कहा कि सामग्री खरीदने से लेके और होम करने की जिम्मेदारी आपकी, पैसा हम देंगे। तो वो बोले कि रोज रोज मेरे को कौन लाएगा। बोला आईसीआर की गाड़ी साहब, अब देखिए आपका इंस्टीट्यूट वाला रोज गाड़ी भेजा, दुकान पर खरीदा तो उन्हीं के सामने, रोज गाड़ी गई, रोज सुबह शाम होम हुआ, अभी नहीं बढ़ी तो मैं क्या करूं। तो नहीं बढ़ी तो मैंने कहा ये तो भाई टेक्नोलॉजी नहीं जा सकती, क्योंकि सामग्री आपने खरीदा और नहीं तो वो कह देते कि आप टाइम से नहीं किए, सामग्री खराब की, तो आप ही लाए। इसीलिए ये गाड़ी दी जाती थी। देखिए वो है, अखबार में आया था कि डीजी तो पागल है, हम करवा रहा है। अरे भाई कोई आया तो हम करवा के देख ले रहे हैं, क्यों भाई ये किसी देखेंगे तभी तो मानेंगे। इसीलिए कंपेंडियम ऑफ वैलिडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करवाया कि जो वैलिडेट हो गया है हम तो ओबीडिएंट सर्वेंट है, वो करेंगे, बट इनफ्रक्चुअस एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे। इसलिए दिस प्री पोजिशनिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिंकेटेड यूरिया कैसे है आप जानते हैं। वो शर्मा जी थे ना, ये डीजी आप भी किस सब्जेक्ट के थे, तो उनसे मैंने कहा कि जो है शर्मा जी आज कैबिनेट की मीटिंग है, जरा एक नोट दे दीजिए। तो बोले कि सर ऐसा है कि आपको तो वही कंप्यूटर में है 10 बार से दे रहा हूं, वो दे देता हूं। अब की बार जो है, और मैं अब रिटायर होने वाला हूं सर, 62 आ गया। तो मैंने कहा बहुत अच्छा शर्मा जी, आज मीटिंग में आप भी हमारे साथ चले। तो शर्मा जी को तो समझ में नहीं आया कि ये क्या, आई हैड डिसाइडेड। तो वहां चिदम्बरम साहब, मानटेन सिंह वालिया, रामविलास जी उसमें फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे, आपके शरद पवार जी, सब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया। तो जब सत्यानाश होने को होता है तब डीजी आईसीआर आता है। तो सारे सेक्रेटरी बोले कि सर प्रोडक्टिविटी डिसेलरेशन हो रहा है सर, वो कुछ भी करने से हो ही नहीं रहा है, व्हाट आईसीआर इज डूइंग रिसर्च एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डीजी साहब बताएं। तो मैं बोला भाई मैं भी बहुत साफ प्रीपोजिशनिंग करता हूं। मैंने कहा सर ऐसा है कि मैं तो जेनेटिक्स का आदमी हूं, मेरे को तो ये सॉइल फर्टिलाइजर आता है। ये शर्मा जी और शर्मा जी से मैंने ये आज पूछा था, तो इन्होंने ये मेरे से कहा। तो जो मैंने शर्मा जी को नहीं बोला था वो वहां बोला, आप मत बोलना नहीं तो नौकरी चली जाएगी। मैं बोला, फिर मैंने शर्मा जी को कहा कि शर्मा जी गलत काम के लिए मोहम्मद गजनवी सोमनाथ पर 16-17 बार जो है अटैक किया था। 16 बार किया था कि 17 बार है? इसका मतलब ठीक ही है। और मैंने कहा सही काम के लिए इस सरकार पर 70 बार अटैक करना पड़ेगा। और मुझे उसी याद है 2 मिनट किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। तो उसका लाभ उठाते समय मैंने पूरा भाषण दे दिया डिसेलरेशन पर। तब ये आया कि जो है हम जो है ये काम करेंगे। कैबिनेट की मीटिंग में अब तो सेक्रेटरी बैठता नहीं है, उसमें सेक्रेटरी बैठता था। मेरे को वो 2 घंटे की बहस अब भी याद है। उस समय कहा गया था जो 5% कर रहे हो नीम कोटेड यूरिया, जो आपका रिसर्च स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर, 20 इयर्स 25 इयर्स। सो जब भाषण दिया था उसमें यही कहा कि सिंस इंडिपेंडेंस यू हैव नॉट चेंज योर फर्टिलाइजर पॉलिसी।
ये पहला सेंटेंस। हाउ यू वांट रिसर्च टू बी डन इन फर्टिलाइजर। और तभी जो है भंवरलाल जैन को सजेशन दिया था, वो हमारा ही सजेशन था, सॉरी। तब उन्होंने इजरायली कंपनी को एक एक्विजिशन करके, अदरवाइज ही वाज ओनली इन इरिगेशन, ही वाज नॉट इन फर्टिलाइजेशन, and he took a decision within 1 minute. We were taking dinner at his home, and on dinner this discussion went. I said, if you do not go for fertigation, the kind of changes which are likely to be the office, 1 minute में वो आदमी बोला कि I will purchase. I was looking at his face. He said, yes, Dr. Saab, I will purchase. And he purchased, and he became the biggest. तो हमारा प्राइवेट सेक्टर में है वो स्ट्रेंथ, वो ताकत है, वो एकुमेन है. But the kind of guidance which is essentially required to be brought in is with the kind of realizing, recognizing, appreciating and telling. वो जम्मू कश्मीर का नहीं बताया, बता देता. तो चीफ सेक्रेटरी साहब वो जो बैठा वो फर्टिलाइजर पे चला गया. तो एक ही सवाल होता है, इज इट वर्केबल, इज इट बैंकेबल, इट इज डूएबल, इज इट इम्प्लीमेंटेबल, यही सवाल आता है. तो आ गया अंग्रेजी में. अब भाई चेयरमैन मैं हूं तो मेरे को ही बोलना पड़ेगा ना जी. तो मैंने कहा कि ऐसा है कि मैं जितना सीधा दिखता हूं उतना सीधा हूं नहीं. तो सन्नाटा, जैसे वो 17 के 70 था, सन्नाटा, वो सबका ब्रेन निकल गया. तो मैंने भाई उदाहरण तो लेना पड़ेगा. मैंने कहा रिजुविनेशन ऑफ ऑर्चर्ड जो है था तो 3000 हेक्टेयर था. वी एग्रीड फॉर 3000 हेक्टेयर. और हमने 2 बार रिवाइज जब करवाया तो उसमें देखा कि नई सेपलिंग लगनी है. जब हमने उसको देखा जो रिजुविनेशन की डिफिनीशन में नहीं था, और इन्होंने बताया कि ये ऑर्चर्ड तो एक पेड़ यहाँ है, तो ये जैसे वन विभाग जो फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर है ना, 1-2 किलोमीटर में 1-2 पेड़ है, वो वन विभाग है. तो हमने क्या किया कि 30,000 हेक्टेयर 3,000 हेक्टेयर को काट के 1/3 बना दिया. तो दलवाई साहब भी उस कमेटी में रेनफेड अथॉरिटी जो कह रहे थे, तो वो बोले कि राय साहब 1500 कर दीजिए. तो हमने 1500 कर दिया, आधा कर दिया. The message which I gave was that we have gone into so meticulously that we have been able to identify that for ensuring production of saplings there would be time lag, and therefore this whole project has been brought down to its half. Means it is doable, it is workable, it is implementable. तो जब चीफ सेक्रेटरी को ये कह दिया जाए कि इतने सीधे हम नहीं हैं, तो उसका बाद there was no question, and that was approved as proposed. The precise point which I am trying to drive home is that we should be very meticulous in planning. I'm sorry, we are not able to pre-petition our self-implementation in general, the whole schemes which government of India is doing. So it is not that the scheme per se is wrong, but what is happening that the very basic implementation, because you are not able to pre-petition your, say for example, the education policy making. You were asking me and I was telling this, that. I didn't give you a definite answer. Why should I? It is none of my job. अब डीजी साहब जो है जब पहली बार आए थे, उसके बाद आज हमारी इनकी मुलाकात है. उस दिन भी मैंने फोन पे ही बात किया था. 1 साल में कोई बात हुई आपसे? Why should I give any suggestion? The very basic element is, it is not the terms and towers, it is the teacher and taught. आप नर्सरी में बच्चे को तो भेज रहे हो, क्या इनेबलिंग एनवायरनमेंट है, इनेबलिंग टीचर है, इनेबलिंग सिचुएशन क्रिएट किए हो, क्या निवेश किए हो? आप पढ़ाने की तो बात करते हो. आप तो यही आपकी पॉलिसी में है ना कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो वो आपका जो खर्चा आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में देते हो उसको हम कम करें. किया है क्या?
वर्मा कमीशन का रिपोर्ट पढ़ा है क्या? पढ़ा है, पढ़ा है वर्मा कमीशन। वही एजुकेशन के ऊपर है, एक ही सीन पढ़े चाहे ना पढ़े, तुम आज डाउनलोड करके पढ़ो उसको। वर्मा कमीशन से सुप्रीम कोर्ट का काम, that 10,000 colleges in this country which are imparting education for teachers are fake. मैं नहीं कह रहा हूं। तो 10,000 जो बीएड एमएड और ये सब जो बांट रहे हैं, वो एडमिशन ले लो, मिल जाएगा। ये रियलिटी है। अगर वर्मा कमीशन कह रहा है कि 10,000, अगर टीचर को ठीक नहीं करोगे, बेसिक एजुकेशन को, तो कौन सा शिक्षा में आमूल परिवर्तन हो जाएगा? 3,000 को एक साथ लाओगे तब यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, ये कोई बात हुई क्या? And that is the reason you have to essentially pre-position all those elements. And the strength of a chain is determined by the weakest link of the chain. Please address the weakest link, then you will become far more stronger and there will be strength into the chain. And finally, I will close, as this whole world is interdependent. And we all are very fond of becoming independent. Not realizing, recognizing and appreciate that although we are independent, we are highly interdependent. तो गांव में जो एक कहावत है ना कि अगर हम ही तुम हैं, तुम ही तुम हो, तो क्या तुम हो, क्या हम हैं। तो NBPGR must contribute in that direction. Continue to discharge your function to utmost your ability and capacity, without considering कि हम ही हम। And those who are users, even if they don't pay respect, continue to serve them. क्योंकि रिस्पेक्ट पे करने वाला बहुत बड़ा आदमी होता है, और बड़ा आदमी थोड़ा कम होता जा रहा है। बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करें। दुनिया बदल गई मटेरियल में, खिंची हुई लकीर को मिटा के अपनी छोटी लकीर को बड़ा करना चाहते हैं। अरे बड़ा बनने के लिए, बड़ा इंस्टीट्यूशन बनने के लिए, बड़ा काम करने के लिए बड़ी लकीर खींच दो, आप अप्रिशिएट होंगे। So, on this very occasion, as a tribute to the great soul of Harbhajan Singh Ji, who contributed enormously, and as your foundations is a day of introspection. And introspection, not what great you did. Always inspect where you falter. Don't tell to anybody, but try to work on this. And I'm sure that will pay dividends. With these words, thanks and thanks enormously to one and all. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your words. I do hope that ICR and NBPGR pre-position themselves, and we hope that with your guidance we do not falter and continue to rise in the service of nation. मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया सम्मान सहित डॉक्टर मंगला राय सर को भेंट दें। मैं निदेशक महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया DG ICAR सचिव डेर डॉक्टर हिमांशु पाठक जी को कृपया भेंट दें। मैं निदेशक महोदय से
अनुरोध करती हूँ कि सप्रेम डेट डॉक्टर DK यादव जी को दें। अब मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करती हूँ कि NBPGR के कुछ प्रकाशन का विमोचन करें। मैं सभी लेखकों और डेवलपर्स से कहूंगी कि वे कृपया स्टेज पर आएं। The first book that we release is 75 Quarantine Pests Intercepted, Ensuring Crop Biosecurity. I request the authors to come on stage. V. Celia Chalam, Kavita Gupta, Moolchand Singh, Zakaullah Khan, Jameel Akhtar, Bharat Gowde, Pradeep Kumar, Pooja Kumari, Bharat Raj Meena, A.K. Maurya, D.S. Meena, and Sarna. This is a compilation of 75 exotic pests interception in important plant genetic resources. These intercepted pests have been reported to be highly destructive and cause significant economic losses in the countries of export. We hope that this compilation will highlight the success story of quarantine at ICAR NBPGR. The second book is for potential quarantine pests for India in cucurbitaceous and solanaceous vegetable crops. The editors are Jameel Akhtar, Kavita Gupta, Moolchand Singh, Zakaullah Khan, V. Celia Chalam. This is a consolidated compilation of 7 chapters which covered 168 pests of quarantine concern. This book is a ready reckoner and will be useful in facilitating safe import of plant genetic resources for the stakeholders. The third book to be released is Plant Genetic Resources Management, Theory and Practice. The authors are R.K. Gautam, Jyoti Kumari, Kuldeep Tripathi, R.K. Parmarthi, Subhash Chandra, Mamta Singh, K.S. Hooda, and G.P. Singh. This publication by ICAR NBPGR highlights the plant genetic resources constituted a treasure trove for crop improvement and agricultural sustainability. This ebook encompasses chapters from eminent experts. The fourth book is 75 in vitro conservation protocols developed by ICAR NBPGR. चौथी बुक है विभागीय शब्दावली. The next release here is the ICAR NBPGR IC Allotments Information System. I request the dignitaries to launch the IC app and request Dr. Sunil Archak to kindly assist in the process. IC Allotment Information System is an online system developed, maintained, and hosted by ICAR NBPGR for the purpose of digitization of IC number acquisition and allotment. So it is my proud privilege to kindly request our DG ICR and Secretary there, Dr. Himanshu Pathak, to deliver his address. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. परम श्रद्धेय डॉक्टर मंगला राय साहब, डॉक्टर GP सिंह जी, डॉक्टर यादव, डॉक्टर राकेश सिंह जी, डॉक्टर AK सिंह, डायरेक्टर IRI, all the very distinguished delegates, staff of this great institute and NBPGR, scientists, technical staff, administrative staff, supporting staff, students, members from our CG colleagues, ladies and gentlemen. First of all, let me congratulate all of you, each and every one of you, on this very auspicious occasion of Foundation Day of this very important institute. So my congratulations to each and every one of you, and my best wishes to the institute and to each one of you. On any Foundation Day,
basically three things are to be done. First one is remembering those who established the institute, who nurtured the institute, and who have taken this institute in this long journey. So my very respectful homage to each and every one of those. And I'm really happy today to see that on this occasion you also organized this particular lecture. And today this lecture was delivered by none other than Dr. Mangala. The second thing which we must do on any foundation day, which is like our birthday, is to take the blessings from our seniors. एक गांव में भी यही प्रथा आज भी चली आ रही है कि सुबह उठ के जिसका जन्मदिन है उनको यह सिखाया जाता है अगर बच्चे हैं तो कि उठते ही बड़ों का पैर चुना है, आशीर्वाद लेना है. And today we cannot be fortunate or more fortunate than when we got the आशीर्वाद from Dr. Mangala Rai साहब. ये बहुत जरूरी है. और तीसरे काम जो करनी चाहिए, जो सर ने भी बताया कि इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए. क्या किया है वो तो जरूरी है, लेकिन आगे क्या करना है, कहां कहां हम पीछे रह गए, कौन सी चीज जो हमसे छूट गई और आगे ना छूटे, इसकी बिल्कुल आलोचना होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए और फिर जो है इसको आगे बढ़ाना चाहिए. सर spent this talk on preposition, which is extremely important. Let me tell you. अंग्रेजी में कहावत है that tomorrow's future is built on today's decision. तो आज आपका डिसीजन अगर गलत हो गया तो आप समझ सकते हैं. अब चूंकि मेरा भी ताल्लुका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है तो उस समय हम लोग एक बड़े कभी काल जोकिंग में बोलते रहते थे, एक बड़ा अच्छा शेर है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने. एक खता होनी नहीं चाहिए क्योंकि वो केवल लम्हों की खता नहीं है, इसका लंबाई कितना हो सकता है, इतनी दूरगामी इसके परिणाम हो सकती है, ये हम सबको आकलन करना चाहिए. इसलिए भी प्रीपोजिशनिंग इंपॉर्टेंट है. और तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर ने जो दोहराया अभी कि सही बात जो है वो बोलनी चाहिए, और खास करके जो वैज्ञानिक है उनको तो बोलना ही बोलना चाहिए. इसमें चाणक्य की एक बड़ा अच्छा कोटेशन है. चाणक्य मतलब कौटिल्य, कि दुनिया में जितना नुकसान हुआ है, और हम सबको लगता है कि जो बदमाशों ने नुकसान ज्यादा किया है, लेकिन नहीं, जितने नुकसान बदमाशों के करने से नहीं हुई है उससे ज्यादा नुकसान पढ़े लिखे विद्वान लोगों की चुप रहने से हुआ है. हमने कुछ बोला नहीं, उनको तो पता नहीं था, जो अनपढ़ है उनको तो पता नहीं इसका परिणाम क्या हो सकता है, उन्होंने तो कर दिया, लेकिन हमें तो पता था कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन हम चुप रह गए. ये भी होनी नहीं चाहिए. अब चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग कैसा है, बोलना तो पड़ेगा. और मुझे खुशी इस बात की है, केवल आज की बात नहीं कह रहा कि आज मैं हूं इसलिए ये सब हो रहा है, आईसीआर ने बोला है. अब धरातल में कहां तक पहुंचा है नहीं पहुंचा है वो अलग बात है, लेकिन लगभग हर एक मामले में, चाहे वो जीएम ड्रॉप का मामला हो,
चाहे वो नेचुरल फार्मिंग की बात हो, चाहे और कोई एक चीज हो जो वैज्ञानिक तरीके से सही है, which is scientifically correct, that has been expressed. That has been expressed, that has been presented, not in one or two fora, but to the highest position of the country. And that is the responsibility. We are paid for that and we discharge that duty. And I think in future we must continue doing all of these things. नहीं तो वो लम्बे तो निकल जाएंगे, लेकिन हो सकता है बाद में हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। ये मुझे बोलना चाहिए था लेकिन मैंने बोला नहीं उससे। Which must not happen. Of course, तरीका होता है, हर एक का मर्यादा होता है, वो मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जहां जहां बोलना है, जैसे बोलना है, जिस तरीके से बोलना है, जिस लैंग्वेज में उसको प्रेजेंट करना चाहिए, वो तो बिल्कुल हम सबको करना ही चाहिए। और मेरे ख्याल ये फाउंडेशन डे में ये भी एक बहुत बड़ी सीख हम सबको लेने की जरूरत है और लेना भी चाहिए। दो चार बातें मैं बताऊंगा जीपी सिंह साहब का जो क्या क्या चीज चाहिए। फाउंडेशन डे में मुझे हर एक इंस्टीट्यूट बुलाते रहते हैं और कभी कल समय के अभाव, कभी कल दूर होता है तो मैं जा नहीं पाता, दूसरे काम भी रहता है। लेकिन आज मुझे पता चला कि लोग मुझे ज्यादा इतना क्यों बुलाते हैं, और वो जरूरी भी है। ऐसा नहीं कि हमारी इनके साथ मुलाकात नहीं होता, हम तो पता नहीं हफ्ते में कम से कम एक आध बार कहीं ना कहीं मिल ही लेते हैं और ये सारी बातें मुझे बोलते भी रहते हैं। तो दो चार बातें मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि काउंसिल लेवल पे, बाकी आपको क्या करना है आप जाने, काउंसिल लेवल पे हम क्या कर रहे हैं। पोजीशंस, all of you know that all the directors, head of the division, species, new positions of VRS scientists who have already joined, around 275. And then in next 4-5 months, there will be more than 2,400 persons who will be in position. 2,400 से आसपास। The process has been done. अलग-अलग स्टेज पे है, कहीं फर्स्ट का रिजल्ट निकल चुका है, सेकंड इंटरव्यू होना है, कहीं रिजल्ट आ चुका है, वेरिफिकेशन हो रहा है, and that will be not only for scientists, it will be for technical staff, it will be for administrative staff, and all others. So hopefully by the end of this year, or certainly by the end of this financial year, at least 90% of the sanctioned position of ICAR will be in position. Number two, budget is always a constant, and उसमें कोई डिबेट की भी गुंजाइश नहीं है। Yes, we know the kind of budget we need for every institute, and what we get is certainly not sufficient. But then one or two things which we are trying to do to help to the extent possible. One is, again, sir is right. ये 5.5 times ऐसा नहीं कि हर साल हमारा 5.5 times बढ़ गया। The number is very correct. It is not 5.5 times. But then year to year अगर हम कैलकुलेट करें तो लास्ट ईयर हमारे जो बजट था, लास्ट ईयर मीन्स 22-23, and then if we compare 23-24 तो उसमें हमें 900 crores एक्स्ट्रा बजट मिला है। So in this year we have received 900 crores additional compared to the last year. That doesn't mean कि long time ago हमारा percentage 0.3 से बढ़कर के 0.6 या 1 point ऐसा नहीं हुआ, just only 900, and probably we are expecting that next year and next to next year and so on we will be able to receive a little bit more than what 900 crores. It could be 1,000 plus something like that. मैं ये सब बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो हमारे साइंटिस्ट, खासकर जो यंग साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, इनको आप ये निराश ना हो जाए कि बहुत ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है, but then there are certain
silver linings also. So this is number one. Number two, APCS fund is very correct. इस तरह का प्रोजेक्ट का प्रोविजन होना चाहिए. अच्छा, एक लाइन में आप लोगों को बोल दूं. Sir was of course saying and directing to me, which is very right. But all these changes, जो भी हुआ है, this is not in last 1 year. कहीं आप लोग को जो खासकर यंग सैनिक उनको ये ना लगे. That's right. Yeah. नहीं, इनको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ. आपको ये ना लगे कि ये सारे जो बदलाव है वो मैंने एक साल में आगे कर दिया. इतनी क्षमता मुझ में नहीं है कि एक साल में सारा बदलाव मैंने कर दिया. वो सारे इंस्टीट्यूट रीनेमिंग, नो, सही है कि गलत है मैं उसमें नहीं जाऊंगा. 900 रुपया आपको डिजिटल मिला है, मेरे को पता. 900, yes sir. 900 crore sir. So बिल्कुल सर, thank you very much. But then all these things, इसके साथ से जो मैं कह रहा था कि बजट में थोड़ा सा हो सकता है हमें, if not APCS fund kind of project money, but what we are going to do, ICAR fortunately has got, which are going to call that as corpus fund, जिसमें around 1500 crores के आसपास पैसा हमारे पास है. कुछ कारणवश वो पार्लियामेंट को हमने एश्योरेंस दे रखे थे कि इस पैसा को हम खर्चा नहीं करेंगे, ये सेंट्रल पूल में ही रहेगा. बट somehow in last 2-3 months we could vacate that assurance, and now we are going to create which we call as corpus fund of 1500 crores plus, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है. And from that amount we are also planning to give projects, not a large one, not 50 crores, 60 crores, even to our younger scientists who need sometimes even 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs. So we'll be able to cater to some extent, not again, as I said, to some extent, cater the need of the smaller requirement to run some of the smaller projects. And just 2-3 दिन पहले जो कि हमने और एक शुरू किया है, which we call as CSR fund. Now Government of India, several other ministries were getting these funds, but somehow ICAR could not do that. But now all the rules, regulations, जहाँ से भी permission से लेना था, वो सब permissions now obtained, and our institutes now can take. And we are happy to say that many institutes have already started working on this. In many institutes, the proposals are ready, so they will be able to generate some of their resources through that source also. And fourth one related to budget is, अभी तक आप लोगों को पता होगा कि जितना भी रेवेन्यू आप लोग जनरेट करते थे इंस्टीट्यूट, that revenue used to go to council and then it was to central board. Now we have taken a decision, whatever revenue you generate, to start with 70% of that revenue will be utilized by the institute itself. इसमें लंबा चौड़ा कोई परमिशन की जरूरत नहीं. डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट विल बी द चेयरमैन ऑफ दैट कमिटी एंड देयर विल बी 3-4 अदर पर्संस. अगर उसका अमाउंट 50 लाख से उससे भी ज्यादा हो जाता है खर्चे में, देन ओनली इट विल गो टू ICAR फॉर इंफॉर्मेशन. अदरवाइज ICAR को आपको बताने की भी जरूरत नहीं है. इंस्टीट्यूट्स आर गोइंग टू बी फुल्ली कॉम्पिटेंट टू जनरेट एंड यूज दैट अमाउंट ऑफ money. Few other things, of course, we are doing it, including streamlining departments, disciplines, certification of several other technologies, expanding our education, and several others, which all of you know. And we meet very frequently nowadays, thanks to online. Physical meeting करना पड़ता तो हो सकता है ये सब नहीं हो पाता, but then almost every month we meet with online with almost every scientist somehow. Of course, many of you might not join, but then the process is on. And at the end, in this era of communication and collaboration, we really have to make partnership with others. And NBPGR is such a strategic institute, which is perfectly placed
for fostering that partnership. You take example of any CG or any other private organizations, any country, probably this is the gateway. और gateway का जो responsibility होता है, that all of you know very well. Now, what kind of research NBPGR should be doing, what kind of other activities should be doing, that I leave to all of you. But what we need to do is to extend our collaboration, to also increase our activities, and at the same time try to generate some resources for yourself, so that up to certain extent we will be able to generate for ourselves and not fully depending upon the council or somebody else. How that can be done? If you think some guidelines to be changed, including fees and so on, what the director was talking about, let us know. We will be very, very happy to make those modifications. At the end, once again, I congratulate each and every one of you, this institute, director and all the staff, and I wish that the contributions of NBPGR, which is already so notable, so huge, so significant, should be even better, should be even more. And to achieve those, whatever council has to do, you please let us know. The council will be always with you to help and to support your activities. With this, once again, I congratulate the institute and thank you very much for inviting me to witness and to listen to today's lecture by none other than Dr. Mangla Rai Sahab. It has been a really, really learning experience, I'm sure for all of you, but particularly for me. आप लोगों ने कितना इनमें से समझ पाए, सीख पाए और कितना शिक्षा लेकर के आप जा रहे हैं, that I do not know. But then, with the knowledge with which I entered the room, and with the knowledge with which I am going out of the room, there is a large difference. So, sir, thank you very much for highlighting all these issues, giving some practical examples, and then enriching our knowledge, guiding us, and I'm sure all of this will be followed whenever the opportunity comes. Thank you very much. Jai Hind. Thank you very much, sir, for the chair's address. We congratulate you for completing 1 year as DG, and we are thankful that you came to NBPGR on this occasion. I request Dr. Rakesh Singh to kindly give the vote of thanks. Good afternoon. Honorable Dr. Mangla Rai, former Secretary dear and DG ICAR, esteemed Dr. Himanshu Pathak, Secretary dear and DG ICAR, respected Dr. D.K. Yadav, ADG Seeds, respected Dr. Gyanendra Pratap Singh, Director NBPGR, our special invited guests, ladies and gentlemen, with utmost and pride, gratitude, I stand before you to extend a heartfelt of thanks on this momentous occasion. First and foremost, I would like to express our sincere gratitude to our esteemed chief guest, Dr. Mangla Rai, for gracing the event with his esteemed presence and delivering the 10th Harbhajan Singh Memorial Lecture. Your vision on Indian agriculture and education has been truly enlightening and inspiring. We truly honored to have you here today. Our heartfelt appreciation goes to Chairperson Dr. Himanshu Pathak for taking time out of his busy schedule and joining us today. Your presence serves as a reflection of your unwavering commitment to the cause, and we are deeply inspired by your gracious presence.
A special thank to Dr. D.K. Yadav for his support and guidance. Your unconditional support has been instrumental in the success of NBPGR, and we are truly grateful for your presence here today. We are extremely thankful to our director, Dr. G.P. Singh, for his tremendous support and guidance in organizing the 48th Foundation Day of NBPGR. Sir, your invaluable contribution has made this event a resounding success. Our heartfelt thanks to our esteemed guests. I would like to name few: Dr. A.K. Singh from IRI, Dr. S.C. Dubey, ADG Plant Protection, Dr. J.C. Rana and Dr. Shikumar from CG Centers, who have traveled from various destinations to grace this occasion. Your presence has made this event even more special, and we are deeply appreciated with your participation. Our sincere appreciation goes to our dedicated and hardworking NBPGR staff. Your support and effort has been the backbone of this event, and we acknowledge and thank each one of you for your valuable contribution. A special word of thanks to our administration and finance department for their timely approval and financial support, without which this event would not have been possible. The success of an event of this magnitude lies in meticulous planning and attention to detail. We extend our heartfelt thanks to chairman of different committee, Dr. G.P. Singh for core organizing committee, Dr. Pratibha Brahmi for invitation committee, Dr. Kavita Gupta for hall arrangement, Dr. Sunil Archak, Dr. Sushil Pandey for refreshment committee. A special mention to Arun Sharma, Surender Singh Ranga and Vijay Mandal for their exceptional effort and contribution. Finally, our sincere gratitude to everyone present here today. Your presence and participation has made this event truly memorable one. Once again, I thank you one and all for making 48th Foundation Day of NBPGR a grand success. With this, I invite you all to join us for refreshment. Thank you.